नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाती है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू में करते हैं। ये रहा ब्यूटीफुल सा कैनवास हमारे स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम अपनी कलाकृतियां उकेरते हैं। नंबर वन क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बोल रहा है? एन एयर कंप्रेसर हैज एन एयर compressor has 8 stages of equal pressure. Stages of equal pressure ratio 1.5. The flow rate through the flow rate through the compressor and its compressor and its overall efficiency are 40 kilogram per second and 84% respectively. Constantly, respectively, if the condition of air, if the condition of air at entry are 8 bar and 35 degree Celsius. Now, determine, क्या करना है? determine number one, the state of air, the state of air at the compressor exit. नंबर दो, पॉलीट्रॉपिक और स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी, पॉलीट्रॉपिक और स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी, efficiency of each stage, efficiency of each stage. Now, fourth one, power required to drive, power required to drive the compressor assuming overall efficiencies, assuming overall efficiencies of the drive as 88%. Take Cp is equal to 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin or 1.4। चलिए सॉल्व इट डाउन करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो हमको गिवन डाटा में देखते हैं क्या दे दिया हुआ है। स्टेज दिए हुए हैं 8, प्रेशर रेशियो 1.5 पर स्टेज, कंप्रेशर एफिशिएंसी 0.84, मास फ्लो रेट
50 kg per second, T0173 plus 35308 Kelvin. Overall pressure ratio RPA is equal to 1.5 raised to power 8, 25.63. Now T8S by T01, T08 by T01, our raised to power minus 1 by gamma. So it is to be 25.63 raised to power 0.4 by 1.4। मतलब एक स्टेप ज़्यादा ही याद करके रखा हूँ। 0.286 इसकी वैल्यू होती है रेशियो की, विच इज 2.53। नाउ द T8S is equal to 308 into 2.53, which is gives the value 778.13 Kelvin. Alright, now efficiency of compressor is equal to T8S minus T01 over the T8 minus T01 CIA TAI। तो CIA आइडियल बाय एक्चुअल, इसमें ये रेशियो चलता है, विच इज इक्वल्स टू 0.84। हमारे प्यारे से साइकिल में यहाँ हो जाएगी वैल्यू 778.13 माइनस 308 अपॉन T8 minus 308, which is gives the value 0.84 के इक्वल करता हूँ। तो साथियों यहाँ पे T8 की वैल्यू नोन हो जाती है, जो कि 867.68 केल्विन ये प्राप्त होती है। नाउ मूविंग अहेड चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवरऑल, ये हमें प्राप्त होता है 559.68 Kelvin। Now change of temperature at बेसिक लेवल, मतलब कि स्टेज लेवल पे, पर स्टेज जो है हमें अनुभव होगा वो होगा डियर साथियों 69.96 केल्विन। ओके, नाउ डेंसिटी ऑफ एयर at inlet. Now rho1 is equal to P1 by R T1. It is to be 1 into 10 raised to power 5 upon 287 multiplied with 308, gives the value 1.13 kilogram per meter cube. डेंसिटी इनलेट की हो गई, तो एक्सिट की आना अमूमन है। तो रो वेट इज इक्वल टू 8th नंबर का प्रेशर RT8 25.63 multiplied with 10 raised to power 5 upon 287.867.68 इजी, तो 10.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये हमें वैल्यू प्राप्त होगी। नाउ स्टेज ऑफ एयर कंप्रेसर एग्जिट पे जो है हमें 25.63 बार प्राप्त होगा और 868 केल्विन।
हम प्रेशर एग्जिट पे प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू ये प्राप्त होने हैं। नंबर सेकेंड, relation between isentropic efficiency and polytropic. The NC is equal to R raised to power gamma minus 1 upon gamma upon R raised to power gamma minus 1 upon NP minus 1. 0.84 is 25.63 रेज टू पावर 0.286 बताया ही हुआ था आपको। 1.4 माइनस 1.45, 1.4 इज इक्वल टू 0.286 माइनस 1 अपॉन अपॉन 25.63 0.286 अपॉन एन पी माइनस 1। तो यहाँ से क्लियर कट हमें पॉलीट्रॉपिक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1036 1.036। all right, now moving ahead, नेक्स्ट पे जाते हैं हम। 0.286 बाय एफिशिएंसी ऑफ पॉलीट्रॉपिक 0.319 के इक्वल एफिशिएंसी ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्राप्त होती है 89.55%। ओके, now ratio in the stagnation to the T1, which is Rs raised to power gamma minus 1 upon gamma. So the value of T2s is equal to 308 into 1.5 raised to power 0.286, 345.87 Kelvin. Now efficiency of each stage is given by now, which is T2s minus 1 divided by T2 minus T1 equal to 45.87 minus 308 upon 69.96. It is to be 37.87 over the 69.96 is to be 0.54 power required to drive the compressor. Power required to drive the compressor P is equal to mCp delta T overall upon and not 50 गुणित 1005 into 55968 upon 0.88, 31.96 megawatt. That is the final value. Easy. Now next question of the day, it is the condition of air
condition of air at the entry of an axial flow compressor of an axial flow compressor stages are E1 is equal to 100 kilonewton per meter square and T1 is equal to 300 Kelvin. The air angles are beta 1 is equal to 51 is equal to 10 degree. Alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to 8. The mean diameter and the mean diameter and peripheral speeds are peripheral speed are 0.5 meter and 150 meter per second respectively. Mass flow rate through mass flow rate through the stages through the stage is 30 kilogram per second. The work done factor is the work done factor is 0.95 and 0.95 and mechanical efficiency is mechanical efficiency is 90%. Assuming an isentropic stage efficiency. Assuming an isentropic stage efficiency of 85%. Determine number 1 the blade height at entry. The blade height at entry. Number 2 stage pressure ratio. And number 3 the power required to the power required to drive the stage. Drive the stage. यहाँ पे हमें R वैल्यू दिया हुआ है 2875 किलोग्राम पर केल्विन एंड गामा दिया हुआ है 1.4. चलिए आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं.
ये बोल रहा है साथियों, द कंडीशन ऑफ हेयर एट द एंट्री ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेशर स्टेजेस आर P1 100 kilonewton per meter square, T1 300 Kelvin. The air angles are beta 1 51, beta 2 10 degree, alpha 1, alpha 2 8. The mean diameter and peripheral speeds are 0.8 meter and 150 meter per second respectively. The mass flow rate through the stages is 30 kilogram per second and the work done factor is 0.95 and mechanical efficiency is 90%, assuming an isentropic stage efficiency of 85%. Determine the blade height at entry, stage pressure ratio and the power required to drive the stage. R और गामा की वैल्यू दिया हुआ है. ओके, तो शैल वी मूव अहेड? डेफिनेटली. सो यहाँ पे हमें गिवन जो डाटा दिया हुआ है, P1 प्रेशर 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, T1 टेम्परेचर 300 केल्विन, बीटा 1 दिया हुआ है 51 डिग्री एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 10 डिग्री, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 8 डिग्री. ओके, DM mean diameter 0.5 meter, mean blade speed 150 meter per second and mass flow rate 30 kilogram per second. Now work factor दिया हुआ है 0.95, मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.9, स्टेज एफिशिएंसी 0.85. ओके, नाउ फर्स्ट वाला कंडीशन ये बोल रहा है ρ1 इज इक्वल टू P1 बाई RT1. नाउ 100 into 10 cube over the 287 into 300, so value is to 1.16 kilogram per meter cube. Now the U upon VF 150 upon 10 8 plus 10 51 109.06 meter per second. Mass flow rate VF into ρ1 by TH1, which is 30109.06, 1.16 into P into 0.5 times of H1. H1 is equal to 0.15 meter. Okay, now अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसकी मेकिंग को, it is to be beta 2 alpha 2 F mean blade velocity at this point is U. Now mean blade velocity is to be U. Over here PR1 PF and V1 beta 1 alpha 1. Okay,
Now here we have some kind of values over here in delta of the stage, which is R UVF over CP multiplied with tan over beta 1 minus tan over the 2. Now the CP value is equal to 0.4 upon 1.4 minus 1. 1.4 upon 1.4 minus 1 into 287, which is 1005 kilojoule kilogram Kelvin. Delta T stage 0.95150 over 1005 into tan over 51 degree minus tan over 10 degree. So the stage temperature is to be 16.37 degrees. Now the pressure ratio equal to 1 plus ns into delta T over the 1 multiplied with gamma upon gamma minus 1. Now it is to be 1 plus 0.5 16.37 over the inch of. Now it is to be 1.4 upon 0.4 1.17. Okay, now power required, last one, power required is equal to P mCp delta T of stage over the Nm 1005 into 16.7 over the 0.9,000. It is to 548.39 kilowatt. That's the final answer. Easy, easy peasy. चलिए सेशन आपका इतना ही रखते हैं साथियों वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।